हेडलाईन्स नंतर बुलेटिनमध्ये आपलं स्वागत। आज एनडीटीव्ही समूहाच्या वाहिन्यांमध्ये जागतिक वाहिनीचाही समावेश झालाय। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज दिल्लीमध्ये या वाहिनीचं उद्घाटन केलंय। यावेळी सुरू झालेल्या एनडीटीव्ही वर्ल्ड समिटची सुरुवात देखील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाने झाली आहे। यावेळी बोलताना पंतप्रधानांनी मोदींनी केलेल्या गेल्या 125 दिवसांमध्ये आणि त्या आधीच्या 10 वर्षांमध्ये केलेल्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला। याशिवाय परराष्ट्र धोरणावरती विशेष भर दिला। भारतानं कोविड काळात केलेलं काम आणि त्यातून जगात तयार झालेली भारताची प्रतिमा याबद्दल मोदींनी भाष्य केलं। पाहुयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा संपादित भाग। एआई का दौर है। दुनिया का वर्तमान और भविष्य एआई से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत के पास डबल एआई पावर की एडवांटेज है। और आपके मन में सवाल होगा कि दुनिया पास एक ही एआई है, ये मोदी के पास डबल एआई कहां से आ गई। दुनिया की नजरों में एक ही एआई है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारे पास वो तो है ही। दूसरी एआई है एस्पिरेशनल इंडिया। जब एस्पिरेशनल इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत मिलती है, तब विकास की गति भी तेज होनी स्वाभाविक है। भारत के पोटेंशियल को सही मायने में रियलाइज करने के लिए तेजी से कनेक्ट करना आवश्यक था। इसलिए हमने एयर ट्रैवल पर भी विशेष फोकस किया। मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है। लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू हुई। आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं। उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया। एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई। उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं। इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं। आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे। आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती है। भारत की स्पीड, भारत की स्केल अनप्रेसिडेंटेड है। अभी हमारी सरकार के 3rd टर्म के करीब 125 डेज पूरे हुए हैं। मैं आपके साथ 125 डेज का अनुभव शेयर करूंगा। 125 डेज में गरीबों के लिए 3 करोड़ नए पक्के घरों को मंजूरी मिली है। 125 डेज में हमने 9 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। 125 डेज में हमने 15 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई हैं। 8 नए एयरपोर्ट पे के काम शुभारंभ हुए हैं। इन्हीं 125 डेज में हमने युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हमने किसानों के बैंक खातों में 21,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। हमने 70 साल से अधिक के बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। आप भारत में हो रहे काम का दायरा देखिए। हमारे तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है,
उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है। यहां जो भारत को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे श्रीमान मार्क मोबियस जैसे पारखी एक्सपर्ट यहां मौजूद है। वो जिस प्रकार भारत में होने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर उत्साहित है, उसका बहुत महत्व है। जब वो ग्लोबल फंड्स को कहते हैं कि अपना कम से कम 50% फंड भारत के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे, तो इसका एक बड़ा मतलब है, बहुत बड़ा मैसेज है। साथियों, भारत आज एक विकासशील देश भी है और उभरती हुई शक्ति भी है। भारत टेकन फॉर ग्रांटेड रिश्ते नहीं बनाता। हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है, और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति से दुनिया में आनंद का भाव आता है। भारत सफल होता है, विश्व को अच्छा लगता है। अब चंद्रयान की घटना देख लीजिए, पूरे विश्व ने उसको एक उत्सव के रूप में मनाया। भारत आगे बढ़ता है तो जलन का, ईर्ष्या का भाव नहीं पैदा होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। पंतप्रधान मोदींच्या नंतर ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी सुद्धा एनडीटीव्ही मराठीच्या वर्ल्ड समिटमध्ये जगातलं भारताचं स्थान कसं अधोरेखित झालं याची माहिती दिली आहे। पाहुयात कॅमेरून यांच्या मुलाखतीचा संपादित भाग। You talked, of course, of the geopolitical shifts and India's new status really at the high table. But when we look at the moment, perhaps, where the West perception shifted of India, when do you think that actually happened? Was it India's strong insistence on going its own, the India way, when Ukraine happened, the UK, the US weren't very happy with that in the beginning? When do you think the perception shifted of India being a global player to reckon with? I think it's a difficult question. There have been so many moments in India's recent history which have woken people up to the potential of this great country. I mean, the opening in 1991, the different approach that was taken. I think the moment when it was clear India's population would overtake China, I think that was a very big moment. Obviously, this huge green transition and green investment, that's important. The lunar mission, I mean, that was an extraordinary moment for India, one where the whole world saw what the potential of India is. My answer, though, would be a bit more parochial. I remember when I came here as leader of the opposition and then as prime minister, one time it was in the year where Indian investment into the UK overtook Japanese investment because of the massive investment in Jaguar Land Rover. And here was this great iconic business, Tata, and obviously mourning the loss of Ratan Tata, who was an advisor to me as prime minister. But an Indian company coming into Britain, taking over one of our most famous car brands, but investing in it, growing it, improving it. That to me was a real wake-up moment for this economy has arrived on the global stage and is going to be one that's going to do great things. डेव्हिड कॅमेरून यांच्यानंतर दुपारच्या सत्रामध्ये एनडीटीव्ही समूहाचे संपादक संजय पुगलिया यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याशी बातचीत केली। या मुलाखतीमध्ये जागतिक पातळीवर भारताचं महत्त्व कसं वाढत चाललंय याविषयी बातचीत झालीच। त्यासोबतच कॅनडाशी ताणले गेलेले संबंध, चीन आणि भारत यांच्यातला सीमावाद आणि आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांशी असणारे संबंध याबद्दल एस जयशंकर यांनी प्रकाश टाकला। पाहुयात या मुलाखतीचा संपादित भाग। Since US and Canada are main players in the western part of the world, US we will deal a little later, but what about Canada situation? How are we dealing with it? Now, have we contained just it? imagine, some time ago you would have said, Canada we will deal with later, let's talk about the US. So now,
For some inexplicable reason, you are saying US बाद में बात करेंगे, चलो कनाडा की बात करते हैं. US is not problematic for us. No, that's true. I agree. I agree. Yeah. US is not problematic for us. But Canada is, even though it's a lightweight. Unfortunately, I agree there also. But such a wonderful people-to-people relationship, and now it is a struggling economy and whatever. But why Trudeau will be doing this? I think, that's a question you need to have Trudeau here, not Jaishankar, to answer. So the equations, in a way, between the West and the non-West, I think is changing. And it's not easy to adjust to that. If you've been dominant and you are less dominant, if there was a time when, in the conversation you were looking up and I was looking down, and now the conversation is no longer like that. It takes a little bit of getting used to. Where Canada is concerned, I think there are some very specific issues. I think a lot of people know that. You are right. If you look at the people to people, if you look at the business relationship, it's very, very strong. For a lot of people, it is very difficult to imagine that we could reach the state of relations that we have today. So why has this happened? I would say definitely there is some history, So again, I give you the first observation that, the broad attitude versus the specific. And I'll give you 2-3 examples of it. Canada has just, they asked us to subject our High Commissioner to a police inquiry, you can say. And we chose to withdraw the High Commissioner and diplomats. Now, look at it. They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently, the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. Or even take the press. I'm at a press event. Now, when we tell them, saying, look, you have people openly threatening leaders of India, diplomats of India. Sometimes the threat is not just verbal, it's physical. So their answer is freedom of speech. Okay? Now, when Indian journalists make social media comments, if you threaten the Indian High Commissioner, he is supposed to accept it as freedom of speech. But if an Indian journalist says the Canadian High Commissioner walked out of South Block looking very grumpy, it is apparently foreign interference. Now, how, look at the, this is not even, double standards is a very mild word for it. So, look, there is this thing that we will do it differently at home, we will do it differently abroad, we will do it our way, but that doesn't apply to you. So I think these are the larger, I would say, adjustments which have to happen in this changing world. अमेरिका ये रियलाइज़ नहीं करेगा कि इंडिया या वो देश जो बहुत कल्चरल कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं उनको इक्वल पार्टनर के रूप में और कहीं कहीं उनको प्राइमेसी देते हुए वो दुनिया में अपना कोई रोल प्ले करने की कोशिश करे और सोचे कि नहीं अभी भी दुनिया हम चला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी, लेट होगा और दुनिया उतना अच्छा नहीं बन पाएगी जितना अच्छा हम बनाना चाहते हैं. नहीं, देखिए ऐसा है, मैं पूरे वेस्ट की मैं बात तो करूँगा क्योंकि सिविलाइजेशनली आप कह सकते हैं, कल्चरली वो जुड़े हुए. बट
मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑल ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज या सब लोगों को वो समझ नहीं है. इनफैक्ट आपने अमेरिका का जिक्र किया, मैं तो उल्टा कहूँगा कि अमेरिका में वो समझ है. इसीलिए अगर आप ये क्वाड जो 2017 में जो बनी थी क्वाड, आप ये क्वाड देखिए, तब तक अमेरिका कहता था कि अगर आप ट्रीटी अलाइन नहीं हैं तो मैं आपके साथ बियॉन्ड अ पॉइंट आई एम नॉट प्रिपेयर टू वर्क विथ यू, उसकी लिमिटेशंस होंगी. नाउ they've evolved, they have changed. Today आप पिछले 7 साल में देखेंगे how much quad has actually grown. So I would say this, when I go to Europe, when I go to definitely US, North America, there are countries which have understood this. There are countries today who say there is a value to working with India. There are countries who say, okay, this is our interest, this is India's interest, let us find a meeting point. Now, the unfortunate thing is that didn't get through in Canada, or maybe the political compulsions overtook that. I mean, as I said, I can only speculate on the reason. So I would not say, पूरे वेस्ट को समझ नहीं है कि जो उनकी ऑर्डर जो है वो चल नहीं पाएगी हमारे बिना. You see, we will all come to understandings. We will, world is a very practical place. तो वो समझते हैं, बहुत लोग एडजस्ट भी करते हैं, कोई कम करते हैं, कोई ज़्यादा करते हैं, कोई कुछ सब्जेक्ट में करते हैं, दूसरे में नहीं करते. So all of that will happen. But it is just in this spectrum, मैं कहूँगा Canada is way behind. राइट. अब चलते हैं चाइना की तरफ, जहां आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है. फॉरेन सेक्रेटरी ने ब्रिक्स मीटिंग के ठीक पहले ही हैज़ अनाउंस्ड दैट सम एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच्ड फॉर डिसएंगेजमेंट एंड पेट्रोलिंग. सो आई विल बी वेरी कीन टू नो सम डिटेल्स हाउ इट विल वर्क. नहीं, well, I think what Foreign Secretary has said is what I can also say, that for those who have not heard that we reached an agreement on patrolling, and with that the disengagement, we have gone back to where the situation was in 2020, and we can say with that the disengagement process with China, you can say has been completed. So, so far I would say that's as much as I can share with you. I'm sure in due course इसके details वगैरह निकलेंगे. So will now India be able to patrol in the areas of Galwan, Depsang? No, you see, there are areas which for various reasons after 2020, because they had blocked us, so we had blocked them. So दो तरफा था, Bob. So what has happened is we have reached an understanding which will allow the patrolling. For example, you spoke about Depsang, और नेबरहुड के बारे में थोड़ा बताइए. एक एक देश को अगर आप स्पेसिफिक बताना चाहें. मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी आके गए, लेकिन बांग्लादेश के साथ एक नई सिचुएशन है. श्रीलंका में पॉलिटिकल चेंज है. भूटान के हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं. तो नेबरहुड को आप कैसे डील करते हुए देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, नेबरहुड में हमें ये भी मानना चाहिए कि आज जो है हमारा नेबरहुड ज़्यादातर डेमोक्रेटिक है, जिसका मतलब है कि वहाँ पॉलिटिकल चेंजेस होती रहेंगी, जो पहले की सिचुएशन नहीं थी. तो आज जो है वी हैव टू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी विच सेज ओके देयर कुड बी चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट, एंड बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज ऑफ आवर साइज, बिकॉज also many common things we have, we will often be the subject of their politics, even if you don't want to be. Okay? So we have to accept that and factor it into our policy. So there will be ups and downs. So 10 years ago, 11 years ago, when Prime Minister Modi came to office, in fact, one of the early discussions we had was, how do we prepare for a neighborhood where there will be changes, where there will be controversies? And the answer is, if we can create a record, not just an image,
a record of being the country which is which is a reliable friend, that कोई भी संकट आए, भूकंप आए नेपाल में, मालदीव्स में वाटर क्राइसिस था, श्रीलंका में मडस्लाइड था, या कोविड के समय में people needed vaccine, or during when the Ukraine war started there was a fertilizer problem. So at times of trouble, if the neighborhood understands, okay, there is this country India, it's a generous country, it's a large country, it is willing to step out, it will not get into I will do what you are doing for me, not that kind of reciprocity. I think if we create that kind of record, which I believe we have, and to me the sharpest example is Sri Lanka. When Sri Lanka got into trouble, within a matter of weeks, we stepped forward, and we stepped forward without subjecting Sri Lanka to I would say political, economic and other conditionalities. थैंक यू वेरी मच सर. आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने ये बताया कि इंडिया सेंचुरी का उनका विजन क्या है, और आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. एनडीटीव्ही वर्ल्ड समिट 2 दिवस चालणार आहे. आजच्या पहिल्या दिवसाचा शेवट जगप्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां यांच्या 3 पिढ्यांच्या सरोद वादनानं झालेली आहे. जाता जाता ऐकूया त्यांच्या सुरेल परफॉर्मन्स.